So, student, this is lecture 44 according to your lesson plan. And in this lecture, we are going to discuss about the causality and stability conditions in Z transform for LTI systems. Okay, or you can say LTI system or any system. Okay, basically I am saying LTI system क्योंकि LTI और LSI सिस्टम ही हम पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने इन दोनों के बारे में बात की। इससे पहले हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि डिफरेंशियल इक्वेशंस मींस कैसे हम एक एलटीआई सिस्टम को एलएसआई सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस जेड ट्रांसफॉर्म एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, सो ऑल ऑफ यू नो दैट कॉजल सिस्टम क्या होता है हमारा, ठीक है, दैट इट शुड बी लाइंग ग्रेटर देन एन ग्रेटर देन जीरो। ओके, अगर राइट साइडेड है तो हम उसे क्या बोलते हैं, कॉजल सिस्टम। अगर हमारा लेफ्ट साइडेड है सिग्नल या सिस्टम का जो रिस्पॉन्स लेफ्ट साइडेड है तो हम उसे क्या बोलते हैं, नॉन causal system. So causality, all of you know, same stability. Now if both conditions are satisfying in this LTI system, causality and non-causal, this stability, then we can say that our system is causal and stable. And that is the main requirement when we go for designing of the any system. Okay, so if I talk about this stability and causality, for stability, all of you know, the system should be BO, BO, that is bounded input, बाउंडेड आउटपुट, ये हमें पहले ही पता है। और बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n equal to 0 to infinity mod of h of n should be less than infinity. Okay, we have seen this definition. Okay, and also did some numerical problem to finding the stability of the system in unit 1. Okay, now if I talk about this system, that is an LTI. Remember LTI, in this unit we are talking about discrete time, because if you remember जो Z transform हम apply करते थे, the signal should be in discrete form. Okay, so this LTI, discrete time system, is bounded input bounded output stable if the its impulse response is absolutely summable. Okay, according to this mathematical expression. Now, so you have to focus on this term impulse response. Okay, we have already discussed how to calculate the impulse response of any given LTI system. Now, we also know, if I talk about the your causal, we also know that for a system to be causal, for a system to be causal, its impulse response must be equal to zero for
n less than 0. Okay, that I told you, that is hn equal to 0 if your n is less than 0. ओके, सो उस कंडीशन में क्या होगा हमारा सिस्टम, इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है कॉजल सिस्टम का, वो मस्ट भी क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए. और इफ यू रिमेंबर, 0 कब होता है, अगर हमारा n इज लाइंग लेस देन 0 वैल्यू. सो फॉर अ कॉजल एलटीआई सिस्टम, अगर मैं बात करूं स्टेबल, तो ये दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए उसके लिए, तभी हम कहेंगे. So when you do solve the your uh, when you calculate the differential equation for any given system, okay, so if you are having differential equation, then how can you identify whether your system is stable, unstable, causal, non causal? So in that case, for a causal, okay, please note down this important point. This is LTI system to be stable. All the poles of HZ must be must lie inside the unit circle in the Z plane. Means that is, for a causal LTI system, causal LTI, remember LTI and LSI both are same thing, so don't be confused. So for causal LTI system, okay, that is for LTI system, causal LTI system to be stable, the ROC of the system function, ROC of the system function must include the unit circle. This is important point, remember. So here it is written, for a causal LTI system to be stable, okay, all the poles of HZ must lie inside the unit circle in the Z plane. That is, for causal LTI system to be stable, ROC of the system must include the unit circle. मतलब जो आप सर्किल हम लेते थे आरओसी के लिए, वो सारे के सारे पोल्स इसके अंदर लाई करने चाहिए. सो अगर आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, आप क्या उसका एच जेड इक्वल टू आपको पता है, दैट इज वाई जेड अपॉन एक्स जेड. इफ यू हैव एच जेड, easily you can find out the poles, draw the poles, and अगर आपको लगता है, अगर आप जब ड्रॉ करते हैं और आपको दिखता है कि वो यूनिट सर्कल के अंदर पोल्स हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे, जैसे ये सिस्टम इज स्टेबल. ओके, और अगर वो कोई भी पोल उस सर्किल के बाहर लाई कर रहा है, देन वी विल से आवर सिस्टम इज नॉन, दिस इज अनस्टेबल सिस्टम. Okay, so I hope this point is clear. Let's take one example so that this thing will be clear to you. Now, the question is given.
Plot the pole zero pattern. Plot the pole zero pattern and determine the stability of the system. ठीक है. Now in question the system is given yn equal to yn minus 1 minus 0.8 yn minus 2 plus xn plus xn minus 2. Okay, that is given the question. So अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की, ओके, आपको एक इक्वेशन गिवन है. अब हमें पता है कि हम कैलकुलेट क्या करना है हमें. अगर मैं बात करूं पोल्स एंड जीरोस आपको फाइंड आउट करने हैं, तो ऑब्वियसली यू नो द फॉर्मूला कि रिस्पांस ऑफ द सिस्टम इन जेड डोमेन क्या होता है, एच जेड, और एच जेड इक्वल टू क्या होता है, वाई जेड अपॉन एक्स जेड. नाउ एक इक्वेशन हमें गिवन है यहाँ पे. सो अगर हमें z के फॉर्म में लाना है, then obviously we have to take the z transform of this given equation. Now इस इक्वेशन का हमें z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है. सो डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट, इफ यू रिमेंबर इन लास्ट लेक्चर whatever I told you. Okay, so yn का डायरेक्टली अगर z ट्रांसफॉर्म हम कैलकुलेट करेंगे, that will be your yz. Now yn minus 1. ओके, सो n minus 1 एक का अगर आप देखें तो ये दिस इज अ टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. और अगर आपको डायरेक्टली याद रखना है, देन यू कैन रिमेंबर, अगर हमारा एक डिले हो रहा है, डिले कैन बी योर प्लस और माइनस वट एवर, लेकिन अगर n माइनस 1 हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, तो डायरेक्टली जस्ट राइट इट डाउन, वट एवर इज माइनस value is over here, that will be the power of the z. So z to the power minus 1 yz minus 0.8 is constant, y n minus 2. So z to the power minus 2 yz. बहुत आसान है. x n का क्या हो जाएगा, x of z, x n minus 2 मतलब z to the power minus 2 x of z. Now from here you can easily find out, okay, you are getting some y term and some x term. So y and z को x को हम separate कर लेंगे. So yz you can take the common over here 1 yz yz yz. So 1 minus z inverse plus 0.8 z to the power minus 2 equal to, you can take the common xz 1 plus z to the power minus 2. Now आपको पता है एच जेड इक्वल टू क्या होता है, वाई जेड अपॉन एक्स जेड. सो ये यहां ले आओ, वाई जेड अपॉन एक्स जेड 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 1 माइनस जेड टू द पावर माइनस 1 प्लस 0.8 जेड टू द पावर minus 2. Now z to the power minus 2. Okay, now z to the power minus sorry, z to the power minus है, और हमें अगर एक फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन की लानी है, तो वी शुड कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ योर z टर्म पॉजिटिव वैल्यू. सो यू कैन डिवाइड विद द हेल्प ऑफ z स्क्वायर. Okay, numerator and denominator. So it will give you the value of z square plus 1 upon your
z square minus z plus 0.8. That is your yz upon xz, and that is equivalent to hz. Now, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? अल्टीमेटली वी हैव टू पैटर्न द पोल्स एंड जीरोस. सो ऑल ऑफ यू नो कि अब हमें कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना होगा कि यहाँ पे इनके रूट्स कैलकुलेट करने होंगे. तो व्हेन यू कैलकुलेट द रूट्स, वो हमारी क्या हो जाएंगी? जीरोस एंड पोल्स की वैल्यूज हो जाएंगी. सो z square 1 अगर हमारे पास है, if you want to calculate the, so I'm just writing the, obviously it will be in the complex form, z plus j, z minus j. Okay, so if you want to check, just multiply both term, you will get the same equation. Now divided by, when you find out the root of this equation, z minus 0.5 minus j 0.74 multiplying with z minus 0.5 plus j 0.74. So you will find out the root of this equation, please. Now from here, obviously अब आपको zeros and poles calculate करने हैं. So मैंने आपको बताया था कि that part will give you 0 and that part will give you poles. So zeros की बात करें, zeros of hz क्या हो जाएंगे? z equal to plus j into 1 and z equal to minus j into 1. ओके, इस पार्ट से. नाउ पोल्स की बात करूं, hz that will be your z equal to 0.5 minus j 0.74 and z equal to 0.5 plus j 0.74. So that you will get from denominator part. So from here you are calculating these values. Okay, now ये हमारे zeros and poles आ गए. Now if you want to draw these, imaginary z, ये क्या हो जाएगा? रियल पार्ट ऑफ z. z प्लेन में आपको ड्रॉ करना है. इमेजिनरी पे ये क्या हो जाएगा आपका? प्लस जे माइनस जे एक्सिस. ओके, प्लस जे माइनस जे क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि यूनिट सर्कल का आपको भेजना है. सो जो रेडियस की होगी वो क्या होगी? 1 होगी. नाउ इफ यू वांट टू प्लॉट पोल्स एंड जीरोस, ओके, सो अगर मैं देखूं जीरोस तो हमारे कहाँ आ रहे? प्लस जे माइनस जे, तो यही वैल्यूज आ रही है. एंड अगर मैं पोल्स की बात करूं तो दैट इज कमिंग 0.5 माइनस जे पॉइंट. सो 0.5 कहाँ होगा? लेट्स सी, वी आर गेटिंग दी 0.5 ओवर हियर एंड माइनस का 0.74, तो जे एक्सेस पे जाएगा. सो दैट इज कमिंग, लेट्स ड्रॉ, यू आर गेटिंग दिस 1 point over here, 1 point over here, क्योंकि 0.74 एक बार प्लस का है और एक बार माइनस का है. ओके, यहाँ पे 4. क्लियर? सो ये आपने ड्रॉ कर दिया. नाउ ड्रॉ करने के बाद ये आपने क्या कहा? क्योंकि सारी कंडीशन किससे हो रही है? यूनिट सर्कल से. सो इसकी जो रेडियस है दैट इज योर 1, और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है? अकॉर्डिंग टू योर पोल्स दैट इज कमिंग 0.5. सो यहाँ से एक चीज पता चलती है हमें कि जो हमारे पोल्स और जीरोस है वो सारे सारे कहाँ कर रहे हैं? लाई यूनिट सर्कल के. ठीक है. सो
स्टेबिलिटी में यू हैव टू चेक योर पोल्स, मींस ये वाले पोर्शन आपको चेक करने हैं कि वेदर दीज पोल्स आर लाइंग इनसाइड द सर्किल। सो आपने देखा ये जो पोल्स आए थे क्रॉस करके जहां मैंने बनाया, ये यूनिट सर्किल के अंदर लाई कर रहे हैं, मींस जो आपका सिस्टम होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। So finding out the stability of any system, what you have to do, calculate the Z transform of the system और calculate the HZ। वहां से हमें पोल्स फाइंड आउट करने हैं, और अगर वो पोल्स हमारे इनसाइड दी सर्किल लाई कर रहे हैं यूनिट सर्किल, तो हम बोलेंगे सिस्टम हमारा स्टेबल है, अदरवाइज हमारा सिस्टम क्या है, अनस्टेबल।